Phnom Penh, Cambodia. Dr. Pahlaj Moolio, Associate Professor, University and Institute of Science and Technology. So I'm talking about skilled labor, skilled people. So all these countries which I've mentioned, first, all in the initial era, say 40 years back, 30 years back, all these nations promoted education. At first place, all the labor went outside in European countries, developed countries, they enhanced their capabilities and came back to their country. What they did, they started small industries, small businesses that really enriched the situation of floods. Our DRR is the disaster risk reduction. We are good at rescue, we are good in providing food, we are so, in philanthropy, Pakistan is top. Every common person has a very tender heart. But you know, that is the very tender thing. First thing is disaster risk reduction. We have to work on that. Third thing is infrastructure. And fourth is industrialization. You know, after Second World War, all those important things happened. Industrialization. All the world became at 0-0. To take two instances. One was the global event, that was COVID-19. All the world just came at 0-0 speed. And then in just 3 years, I don't expect that everybody is going to behave like Elon Musk. दोनों parameters को ज़हन में रखते हुए, you have to dig deep and see how different countries are interacting. Showing you two scenarios. That's my own imagination, or you can say speculation, and how the world is going to, where the world is going, how we can mold the direction of the world. So basically the questions that I am going to address are how it's shaping the world and where the world's economic center of gravity is currently located now. Is there any change happening or not? And if this change happening, are there challenges in the change of the center of gravity of the economic gravity? And if there are challenges, what we can do to avoid these challenges? Everything will be in the context of Southeast Asia. So, yes, it's short. So here, see, you can see I prepared, these slides, very few slides, so that you can see here the growth and the shape. If you see from the side, these are the very, letters of it. Here, from the left, I take you 2,000 years back. 2,000 years back. And you see, right, start from AD 1, and see human population is growing very gradually. And right, when you see 1776 or 80, around somewhere there, this is the event happened, major breakthrough happened. First, industrial revolution. First in the Europe, right? And that was the very critical point in the human history, and that population started to grow. And now here is very simple. Now you see here I give this timeline that from year 1 until year, you can see 1804, somewhere you see 1804, right? Where the human population became 1 billion. All the while from very beginning of the human history until year 1804, the population became only 1 billion. I showed you in the curve, right?
And then you see here 1930, become 2 billion. And then you see here 1960, become 3 billion, and then 1974 become 4 billion, and then the speed of the population, picked up, and then 1997, 5 billion, and 1999, 6 billion, and then 7 billion, and now, next month, I can give you the exact date, 15 November, World Bank's projection. 15 November, population world become 8 billion. And definitely. So, not only this, if we see what happened to actually population growth in Pakistan. See, this was the world picture. Germany, that they invite distinguished professors from around the world. So they invited me as guest professor for 6 months. And so I know how people are unhappy when they reach to 60 and they want to retire. The government said, no, you have to work 5 more years, you have to work 3 more years. Right? So in Pakistan we are happy. Yeah. We can take extension, we can keep on going, no problem, right? Okay, so what I am saying that the population growth is very uneven. And this growth is also affecting. Now how they do in Europe? So they attract the migrants. But these migrants' efficiency is not same as European population efficiency. Because I go to Berlin, I go in France. Many times I went to France, I went to Berlin. So our people, people from Asia, when they go to Europe, their efficiency is not same as the European. So that is affecting the economic growth in Europe. I will give you some data. So the third point in the context of population, what I will take is this, that migration. So as earlier I was talking, migration, yes, migration is happening worldwide. That's affecting, in some place, affecting the economic growth, but in other place it's helping the economy. It's not that migration is bad or migration is good. There are cons and pros and cons, advantages and disadvantages. Okay, but data says 1% out of 20 is migrant at the moment, and in next 10 years the share of migrant workers will increase, international migrant, cross-border. So that is balancing the world. Why the economy in Europe is going down? I will tell you. Okay, and then the last point that so this already happened. Okay, sorry. Urbanization. The urbanization is happening very, very fast in many countries, especially China, India, even in Pakistan. Whenever I come here, I say, oh, this road was not there. Oh, this hotel was not there. Oh, this colony was not there when I was living in Kasmabad. So, Devi. Jam not angel Deviya. Trees, not India में देवियाँ सुनाता है angels के, lady angels. So देवी का बाग होगा, कंडा होगा, मानव पंजे में जगह कोई कास्माबाद बिंदर को, आउं के कास्माबाद बना. But now you see that Kasmabad has been district, a very developed district. Last night I was going through my first job. I started in St. Bonaventure. Teacher in mathematics from city St. Bonaventure, they were not happy to go to Kasmabad St. Bonaventure. Now I was living next to St. Bonaventure, and then I applied. And then they say, okay, sir, Bhattiram. He was very happy, and he said, okay, you please can go and teach their mathematics. Because mathematics teachers are not happy to go to Kasmabad. You see, this is the situation now. People wish to live in Kasmabad.
right? So that is urbanization happening everywhere. Okay? So that is what I say. So data now at the moment, half population of the world is actually, and they need air condition, they need car, they need, in Europe especially, they need gas to warm their houses. And now they are in big crisis because they cannot get cheap gas from Russia because there is embargo, restrictions, and this. So this is affecting. Before they were getting cheap gas from Russia, but now because of this conflict of Russia and Ukraine war, so a lot of things and we cannot really cover here. So okay. So next, yes, let us see the economics. So well, so you might say. Now you are thinking, you might say that, what's the problem? Yeah, population is growing. Yes, population has become urbanization, this and that. So what's the problem? There are no problems. But there are challenges and we have to tackle these challenges, right? So several studies have found early, and you can see in your common sense that जब population grow होती है तो उनके लिए खाना तो चाहिए ना. हमें अपनी फैमिली में देखते हैं अगर हमारे फैमिली के मेंबर्स बढ़ते हैं तो उस हिसाब से हमें पूराकरण करना चाहिए, राइट? So same thing in the national level, same thing in the world level. And now those experts, they can talk about food insecurity and this and that. Okay. So all this is putting great pressure to feed the people in the world, to light their home, to manufacture cars. Is the demand for energy, not something very new. I'm explaining you about energy. This is everywhere. This is the crisis of energy. Right? The energy consumption is going to be double in next 20 years or 25 years. Energy consumption is going to be double everywhere in Pakistan, everywhere. Whether it's a developed country or it's a developing country. And this is going to have dramatic implications because we need to keep people warm, give them lives, give them comfortable life, make air conditions, washing machines, everything. So we need all manufacturing, we need energy, right? So this is one challenge. You can see challenge and you can see issue, you can see whatever. Okay. So now let me say a little bit about, as a global level, how these two factors, population growth and the economy, are affecting. And at my personal level, I will speculate two scenarios. Then I keep a lot of things because I can see students, brilliant students, to ask questions so that I can interact more. I think this will be better. Yeah. If I take everything and then you have no question, it becomes very easy. Ask question, difficult question, because difficult question easy to answer, easy question difficult to answer. Okay. So changes in global economy are inevitable. Event happened, major breakthrough happened. First, industrial revolution. First in the Europe, right? And that was the very critical point in the human history, and that population started to grow. And now here is very simple. Now you see here I give this timeline that from year 1 until year, you can see 1804, somewhere you see 1804, right? Where the human population became 1 billion. All the while from very beginning of the human history,
until year 1804, the population become only 1 billion. I showed you in the curve, right? And then you see here 1930, become 2 billion. And then you see here 1960, become 3 billion, and then 1974 become 4 billion, and then the speed of the population, picked up, and then 1997, 5 billion, and 1999, 6 billion, and then 7 billion, and now, next month, I can give you the exact date, 15 November, our world is projection. 15 November, population world become 8 billion. Definitely. So, not only this, if we see what happened to actually population growth in Pakistan. See, this was the world picture in 1947, so no need to go to before 47, right? So let us say the last 6 decades or 7 decades, population of Pakistan has become 5 folds, 5 times. Okay, from already from 44 million in 1960, let us say, then 230 million or something around this figure now. Okay, so 5 times, and Pakistan is number 5th in the world, in the rank. So China, second one, India, third one, America, and fourth one, our country, Muslim country, Indonesia, and the 5th one is Pakistan. This is not bad. I guarantee you, overpopulation is not bad. Okay, overpopulation is bad. Then why China can grow very fast? Right? Overpopulation is bad in India. Why India is growing fast? And why we are not growing fast? So my point is not that population is bad. We have to see the direction of our development. Okay, so you see here, there is another change is happening in the population. Is this that the growth is uneven? See that there was in general there was growth, very fast growth, right? There are some regions in the world that growth, as population growth is fine. So there are many issues in European countries where the population is shrinking, like Spain, like Italy, 100%, 100% data, correct data. And at that time there was no USA, there was no America, there was no only EU. Some openness was going on, and the काफी lesser करते थे पाकिस्तान में. साइन कैसा होता है? साइन पाकिस्तान का learning time. And this one time intelligent student and child learning. Anybody want to go to? Okay, I come into the option. Tamaki देखने I make something big. Okay, tamaki option. केरे मुल्क में कहाँ study करना चाहेगा? केरे मुल्क में कहाँ second करना चाहेगा? पूरी दुनिया. अमेरिका, कनाडा, हाँ, जापान, हाँ, कतर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा जगह तो कंबोडिया? Why? कौन सा जगह वियतनाम? यकीन ताकि दायां से आऊँ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में रही हो यहाँ प्रोफेसर ये साहब सां, उसे 9,500 यूरो मुझे पगार हुई, 9,500 यूरो, हम फुल प्रोफेसर की पोजीशन पे उतर, मुझे पूरी फैमिली का चैन मिलना, उन्हें किराया ना, भाड़ा ना, अपार्टमेंट ना, सब कुछ मिला, ये तमाम होती,
highly professional position, DAD best professor. पर ये मैं क्यों पूरा चीज़ और पगार मुझे ना कमा कितनी हुई? सारा केला यूज़. He takes, who takes, tool takes, cleaning takes, road takes. अरे बाबा बहुत कार आई है छाछ रोड takes क्या? आई इतने दफे ये जो मेरी फैमिली यहाँ से आई कौन हुई? तो डॉक्टर ने शुरू कर दिया रात को इमरजेंसी का फोन पे बाबा हम 650 यूरो का ये हेल्थ इंश्योरेंस जा तो हर महीने में लाइन डॉक्टर ने शुरू कुछ कहे वाला बट और ना को छोड़ो प्रमुख नहीं को प्रोसीजर you have to do this you have to do this you have to this ना मरी नहीं वो छाक करो पंजे तरह के जो डिफरेंस है जर्मनी जो इन कंबोडिया जो तमो फोन घुमायो पंजी होम मिनिस्टर के काम करा होम मिनिस्टर के रूप में तो उन्हें जो बाबा कि सुबह होती 6 बजे फोन रिंग पे व्हाट हैपन मुझे डॉक्टर ने सुना कि तो मुझे गोरी पूरी नहीं हो ना इतनी गोरी हुआ था ठीक थी यदि सो डॉक्टर जो सुन 650 यूरो हो गया तो डॉक्टर ने सुना मुझे तो प्रोसीजर फॉलो तो करना है प्रोसीजर नाउ फ्रस्ट्रेटेड okay मुझे डीन जो why are you going I want to extend your contract मुझे खिली दिखा बैठ में ना ये चाहिए थी तूफान रोई पे है मुझे चाहिए तू वे आने तमाम जो पहला ड्रीम था I wish you good luck wherever now when you travel हो still I don't say that you are America still the best universities in the world still located in Europe America of course we also have one of the best universities I don't know you heard about it or not University of Singapore University in Thailand Asian Institute of Technology in Thailand we have also one of the best universities 100 ranking universities in this region you want to come there they have scholarships of course you have to complete the scholarship and come and learn in the regional context, not in this very theoretical context. So, prospects yang dunia याद रखिए दुनिया बेहतरीन डालने पे या दुनिया बैकवर्ड हो जाएगी ना हाँ बैकवर्ड हो जाएगी एडवांस right world is still progressing 21st century is the best century in the world throughout the history हाने असांजा पंहिंजा मसला आहिनि मसइलनि खे असां कीअं हल कयूं उहे जेकर मसइलनि खे असीं हल करे वञूं असांजो मुल्क तरक़ी कंदो असांखे किथे जर्मनी कैनेडा ऑस्ट्रेलिया वञण जी ज़रूरत कान्हे जर्मनी कैनेडा इहो ठीकु आहे वियासीं स्टडी करे आयासीं वापसि आयासीं असां पंहिंजे मुल्क जी ख़िदमत कयूं हाणे प्रायोरिटीज़ खे ॾिसणो पवंदो हिकिड़ो ई मां तव्हांखे मिसाल ॿुधायो त वियतनाम ऐं चाइना वियतनाम चाइना 1000 साल में जंग रही कोई सागे बॉर्डर थे इतने रुपए डाले नो मोर वॉर ॿियो तव्हांखे मिसाल ॾियां तव्हांखे ख़बर आहे सिंगापुर एंड मलेशिया राइट बिफोर दे वर वन फैमिली राइट हस्बैंड वाइफ वन फैमिली सब चिल्ड्रन मेलाका एंड बोर्नियो चिल्ड्रन हस्बैंड वाइफ बस husband, wife, and some children. Malacca, state of Malacca, Penang, and Borneo Island, Sabah, Sarawak. This is our family. What happened? This family decided to break. Husband and wife said that let us divorce. I don't like you, you don't like. I am Chinese, in majority in Singapore. I am Chinese. You are Malay, something like this, and you have both Indians from South Indians. South India, let us separate.
We cannot go along each other. They separated. But still they are living in the same home. हजार Malaysian रोजाना बस वठना बस ट्रेन श्रीलंका सिंगापुर उते दी भी कम करे वरी वापस पंहिंजे घर ईंदा मलेशिया. Is it imaginable in Pakistan because we were countries? Why not? So when divorce day. असांखे त माशाअल्लाह आज़ादी मिली वई. Yes. असां कंहिंखां आज़ादी वरितीसीं कोन, मिली वई. ठीकु आहे, हुननि डिवोर्स कयो. No more we want to be husband and wife. You husband, Malay, you are very strong. I am Singapore, I am small, my wife cannot live together. But now they compromise. Whenever compromise किया, pragmatism. असां एशिया में इहो कल्चर आहे जेको compromising का sense of compromising. East Asia. ॾिसो ना चाइना जो इन्हो ठाहिवार में तव्हां किसो त आया वाली यारी ख़बर आहे तो डिटेल में न वञा. ठीकु आहे, पर छा आहे हीअं सिर्फ़ु LSi आई उन जे करे उन्हनि थोरो वरी छिका करे थी उन आदमी ट्रेड हले थो. ट्रेड जो आहे बाबा ठीकु आहे. Taiwan, whatever you want to think yourself, Chinese समझंदा ठीकु आहे, जेको पंहिंजे पाण खे सम्झी थो सम्झ. Let us work together. हाणे आउं इन पॉलिटिकल साइंस में नथो वञणु चाहियां. अहिड़े नमूने सां काफ़ी केसिस आहिनि. ASEAN was bought of EU once upon a time. Bought खां खबर bought in EU. तो ये bought टूटी वयूं. घणा मुल्क थे हम यूगोस्लाविया एरो वाला घणा 2011 मुल्क हुए. ठीक है. ASEAN was the मुझे दिशा मुझे पूछा कि मुझे बिहेव सुठो ना आहे मुझे छोकरो छोकरी इज्जत को आउं इन फेयर ना आया मुझे भारत सा मुझे पुट सा इंडिया में चला कलकत्ता वो पुट के पूरो बेदो दींदा है नाश्ते में ठीक है अध करे दींदा है स्पेशली कलकत्ता वाले जो फेमस है पुट चाहे वडो थी तो कमाए मुझे कराए तो दी ने का नी कहते जे घर में एड़ा होना ठीक है अध बेदो सही. This is injustice. You also सुधार को need to be nice. आई असान बोलन तकी कर से जेकरे उनी जो सिनेरियो छा है असान नाइस न थियो असान मेरे पाण उनी हिसाब से हालो. ठीक है, हां मुझे सया मुझे हिसाब से मुझे ज्यादा ठीक है वे घर हां मुझे काम ऊपर अंदर कचरा है चूल्हो साफ करना है वगैरह वगैरह. तदेन काको हंदो भी पर तकलीफ थी न्यू फैमिली में तकलीफ थी न्यू रीजन में तकलीफ थी मुल्क में डिजास्टर ही था यहाँ असां फेस कयूं ना. तो चवण जो मतलब यो आहे या त असां नाइस थियूं असां पंहिंजी ग़लतियूं तस्लीम कयूं ऐं असां पंहिंजी मेंटेलिटी चेंज कयूं ऐं असां अॻिते वधूं. या असां पंहिंजी उन मेंटेलिटी में रहूं छा थींदा बहुत वारी मेंटेलिटी उन में रहूं प्रॉब्लम फेस कयूं वो प्रॉब्लम will create another problem will create sense of responsibility grow. Now we have to be responsible. So very असां या त असां सुठा थी हर शइ खे असां उन हिसाब सां चेंज कयूं या असां प्रॉब्लम फेस करे मरी जी कुकर मिलंदा आहिनि तो वो 10 साल सिंगापुर जो एम्बेसडर हुयो यूएन में वो 10 साल वो यूएन में फॉरेन मिनिस्ट्री में रहियो हुयो. जो रिपोर्ट आहे चए थो बाबा भई सिंधी आहे बाबा असांखे पंहिंजे पेरनि ते पाणे बीहणो. सिंगापुर was a poor country 1965 जॾहिं हुननि सेपरेट कयो. हुननि जी GDP घाना जी GDP
का घट गाना ताम तो गाना इथियोपिया है वो सिंगापुर की जीडीपी गाना इथियोपिया ने जी ने का घट हुई पर हां सिंगापुर छो तो तक करे बसा तो का चिका यार सिंगापुर का नरम सिंगापुर नरम वैसे ही होता छो उन्होंने इतनो तमाम सिंपल उसूल थे उन्होंने फॉलो कर जो प्राइम मिनिस्टर हो चाइनीज and your deputy prime minister Indian. उन्होंने जो let us think Indian and Chinese philosophy. उन्होंने जो तो बाण के कारण विषय की invention करने की जरूरत है. We don't need to invent anything. Whatever problem we face, there is in the world there is some solution somewhere they found already in the world somewhere. Let us copy and paste. Let us copy and paste in the context global context. Not exactly copy and paste, but we think, we say, okay, this solution will work for in our context. Assam के modify करें, local context बनाएं, assam के implement करें. आई उन्होंने ये लिखा हुआ है. मुंपान के क्वेश्चन करो. सिंधी में मुंपन क्वेश्चन करो. किशोर साहब, तमाही मुल्क के जब ज़मीनी कोने ताम इतनी इमेजिन करो कि आयरलैंड आए उन्होंने ज़मीन कोने में पियन जो पानी के बाद बाहर मुल्क का हो रहा है ना. तो खाओ पानी आए. मतलब बाजू को जो दिन पटाटा बोलता थे नहीं शहर आए सिर्फ पेट्रो डेवलपिंग होती तो उन्होंने जो आसान से कॉपी पेस्ट किया उसे आसान काश ऐसा इन्वेंशन करने जरूरत आ गई आसान एफडीआई ने गलाया आसियान में रेशियो ऑफ एफडीआई द हाईएस्ट इन सिंगापुर आहिस्ते होता है असांखे पंहिंजी ग़लतियूं तस्लीम करणी पवंदियूं ऐं असांखे पंहिंजे मुल्क में रही करे असां पंहिंजे मुल्क खे कराए सघूं था असां हर शइ आहे सिंगापुर त कुझु कोन्हे थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन पॉपुलेशन है किसी कंट्री में वो उसकी इकोनॉमी पे असर नहीं करती जिस तरह आपने एग्जाम्पल दी चाइना भी हो गया इंडिया भी हो गया इंडिया की ग्लोबल मार्केट है तो अगर हम देखें जो पाकिस्तान है वो फिफ्थ उस पर आ रही है पॉपुलेशन में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की तो पाकिस्तान की क्या वजूहत है कि मतलब वो इस तरह तरक्की नहीं करी इंडिपेंडेंट अगर इंडिया और पाकिस्तान ने इक्वली मतलब सेम जिनके मतलब हासिल करी थी लेकिन वो ग्लोबल मार्केट है और साउथ एशिया में बिग ब्रदर का रोल अदा करी मेरा पहला क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन ये कि जिस तरह आपने कहा आसियान हो गए और ईद होगा वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं है आपने ब्रेक्सिट की एग्जाम्पल दी जिस तरह ट्रेड एंड मतलब वहाँ से चलेगा उनका इशू ये था कि ना वीज़ा फ्री पॉलिसी थी कि वहाँ के माइग्रेंट आ रहे थे लंदन में जो उनके लोग हैं मकामी लोग उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी क्योंकि दूसरे अवेल कर रहे थे लेकिन अगर कंपेयर करें साठ की अगर हम इकनॉमिक ग्रोथ देखते हैं तो वो होती है 3.5 दो लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया और पाकिस्तान अगर ये मिल के ट्रेड करें तो एक अच्छी साउथ एशिया रीजन में इकनॉमिक ग्रोथ कर सकती है लेकिन आसियान को देखते हैं और ईयू को देखते हैं उसका जो इकनॉमिक अगर हम वो ट्रेड बजट निकालते हैं तो वो निकलता है 5 से 8% तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं ना कि यूरोपियन यूनियन और आसियान किसी हद तक तो सही है लूप होल तो होते हैं इसमें भी इथनिसिटी इशू थे जब आसियान बनी थी लेकिन साथ का ये होता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है इस वजह से तरक्की नहीं करती तो आपने अपना सवाल भी दे दिया आपने जवाब भी दे दिया आपने क्या था कि इसलिए तरक्की नहीं करी मतलब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पूरी तरह ये लोग तरक्की नहीं कर रहे लूप होल तो सब में होती है वीकनेस होती है लेकिन कंपेयर करें साथ से तो काफ़ी अच्छी हैं दोनों अभी देखें थैंक यू ये इससे रिलेटेड या यही क्वेश्चन किसी और का भी है रिलेटेड यहाँ से सर इस तरह की है कि आपने कहा कि पॉपुलेशन जो है ग्रेट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में तो दूसरी साइड इसको पॉपुलेशन ग्रोथ सारी कंट्रीज का ये मेजर प्रॉब्लम क्यों है सारी कंट्रीज को पॉपुलेशन ग्रोथ होना क्यों चाह रहा है रिपीट करें दूसरा क्या बोला सर जी जो ना जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ था वो कंट्री जो जीडीपी की ग्रोथ करना है पूरा रोल प्ले हाँ बिल्कुल तो दूसरी साइड सारी कंट्रीज या जो वर्ल्ड है वो छोटा कर्ज का छोटा पॉपुलेशन ग्रोथ के रोकने की कोशिश कर रहे हैं हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने दिसो इथे ब एंगल आने दिसो ना
जेकॾहिं तव्हां पॉपुलेशन जी ग्रोथ कंदो रोकाईंदो हिकिड़ो ई सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट इज द पॉपुलेशन जेका आहे उहा हेल्प्स ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ठीक आहे and it's not help the growth of economy if your population is skilled असांजी सिचुएशन ॾिसो हिते पाकिस्तान में एजुकेशन रेशियो इवन एजुकेशन रेशियो whatever पर उनजी जेका लेवल ऑफ एजुकेशन छा आहे 5 जा पास आहे पर उनजी ठीक आहे पॉपुलेशन ग्रो आहे और उन सां गॾो गॾु तव्हां उनखे एजुकेशन ॾियो त को प्रॉब्लम कोन्हे हाणे सेकेंड क्वेश्चन थो अचे त जिन मुल्कनि में पॉपुलेशन वधे पई ऐं एजुकेशन खे इम्प्रूव नथा कनि एजुकेशन बजट 0.something बढ़िया एजुकेशन बजट है 2% let it be natural but we have to see केतिरी पॉपुलेशन वधे थी उन हिसाब सां असांखे उनखे एजुकेशन लाइ प्रिपरेशन वठणी आहे यूनिवर्सिटियूं वधाइणियूं आहिनि करिकुलम इम्प्रूव करिणो आहे ऐं असांजी ॾिसो न हिते मां ॿुधायां सॼी दुनिया में आबादी खे रोकण जो कोन्हे को कॉन्सेप्ट पर उनमें आबादी में स्पेस जो आहे बर्थ स्पेस लाइ जेका सॼी दुनिया में कोशिशि पई करे बर्थ स्पेस खे तव्हां आबादी खे रोकियो न छाकाणि जिन दुनिया जे सुधरियल मुल्कनि आबादी खे रोकियो आहे उते अफ़रादी क़ुवत ख़तमु थी आहे अॼुकल्ह उहे मुल्क परेशान लॻा पिया आहिनि त असां वटि माण्हू कोन्हनि जो असां कमु करे सघूं यकीनन हिन वक़्तु जदीद दुनिया आहे मशीनरी जो दौरु आहे अफ़राद जी एतिरी ज़रूरत न आहे तंहिं बावजूदि जेकर मशीनरी आहे त उनखे मुफ़रदा रहण वारा आहे इन करे केतिरा दुनिया जा मुल्क आहिनि ग़रीब मुल्कनि खां माण्हू चवंदा अचो असां वटि कमु कयो त पाण सभु सहूलियतूं ॾियूं था त इन वक़्तु जॾहिं त जे पॉपुलेशन के हवाले से सॼी दुनिया में इहो चयो वियो कॉन्सेप्ट त जेके असांजा नौजवान आहिनि जेके असांजा यूनिवर्सिटियूं आहिनि जेके असांजा तइलीमी इदारा आहिनि त नौजवाननि खे फैमिली प्लानिंग जे स्पेस जे बारे में तव्हां अवेयर कयो बहरहाल असांजे मुल्क जे अंदरि जिते वॾो मसइलो आबादी वधण जो आहे उते को बि अहिड़ो प्लान कोन्हे को इन बारे में मां छा चाहियां इहो तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु पंहिंजी जॻह ते सही आहे बट स्पेसिफिक शायदि हिन में आउं त हेल्थ जो एक्सपर्ट आहियां कोन पर मुंहिंजी पॉइंट इहा आहे हिते त जेकॾहिं असांजा फैमिली जा मेंबर वधनि था उन हिसाब सां असांजी फर्स्ट प्रायोरिटी जेका ॾिनी आहे हिते असांजा 10 भाती आहिनि घर में ॾेई पढ़ियल लिखियल आहिनि त असांजे घर में को प्रॉब्लम ऐं इन सां गॾो गॾु यू मे नॉट एग्री तव्हां न एग्री कयो ठीकु आहे हिकिड़ी पॉइंट आउं हिकिड़ी हमेशह यादि रखंदो आहियां जेकॾहिं मुंहिंजा 2 ॿार आहिनि ठीकु आहे मुंहिंजा 2 ॿार आहिनि हिकिड़ो छोकिरो ऐं हिकिड़ी छोकिरी आहे ठीकु आहे ऐं समाओ मूं वटि कैपेसिटी आहे पढ़ाइण जी सिर्फ़ु हिकिड़े ॿार जी कैपेसिटी आहे पंहिंजी छोकिरी खे पहिरीं तरजीह ॾियां पंहिंजी धीअ खे पहिरीं तरजीह ॾियां स्कूल मोकिलियां मुंहिंजो छोकिरो जेको आहे उहो घर गाॾी ॻाल्हाईंदो पंहिंजो पेट पालींदो मुंहिंजी पहिरीं तरजीह मूंखे छोकिरी खे ॾिनी हाणे ॾिसो न असां वटि असांजी सिचुएशन ते कीअं आहे मूं वटि रेडीमेड को फार्मूलो चाइना जो राइज घणो थियो आहे चाइना जी जेकी हाणे पॉलिसी आहे जेकी ब्रिक्स जे BRI जो प्रोजेक्ट आहे ऐं उनजे तहत जेको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है कब्जो करे तंहिंमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स खे जॾहिं हू कैप्चर करण जी कोशिशि थो करे त तंहिंमें एशियान एसेट अची था वञे त एशिया खे इहो चैलेंज आहे त जो चाइनीज़ पावर आहे उहो उनखे थ्रेट थो करे इकोनॉमिकल चैलेंज जे हिसाब सां ऐं जेकॾहिं पाण ॾिसूं तव्हां चओ पिया त चाइना ऐं एशिया पाण में कोऑपरेशन करनि पिया लेकिन कोऑपरेशन उहा हिकिड़ी सम एक्सटेंट ताईं आहे फुल एक्सटेंट ताईं कान्हे त जेकी कोऑपरेशन करे ऐं हुनखे हलाए रहे फॉर सपोज ताइवान खे ॾिसी वठूं या मलेशिया खे ॾिसी वठूं त हुननि ॿिन्हिनि जे विच में कोलिशन हलंदी पियूं त हुन ॿिन्हिनि जे विच में एशिया ऐं चाइना तव्हांजो उन बारे में छा आहे त चाइना एशिया खे केतिरो थ्रेट करे थो ऐं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कॉम्प्लिकेटेड ॾिसो आसियान जी छा आहे स्ट्रेटेजी आसियान एक्सप्लेन द आसियान ॾिसो हिते डाइवर्सिटी very diverse region ASEAN हाणे छा आहे त तव्हां पंहिंजे घर में दाल था पचायो या मुर्गी था पचायो या अंडो था पचायो
मुझे छा वञे तव्हांखे चवंदा मुंहिंजी जे छंछर दुनिया आहे मुंहिंजी न कयो आचार आहे ही कयो हू कयो मुंहिंजो को वास्तु न आहे तव्हांजे घर में तव्हांखे who fully recognize the sovereignty of each state. Fully so इनजे करे उहे जेके इलाही उहे दे आर वन कम्युनिटी आसियान वन चाहे वो तव्हांजो The first point that we discussed was education, regarding education, and you linked it with the skilled labor. Yep. Basically, sir, we have one of the finest and skilled labor. That's why we are doing immigration, and we are working in Saudi Arabia, we are working in UAE and other part of the world as well. The point here is that how far do you agree with the system theory of Immanuel Kant? Because you have referred to Mahbubul Haq as well. महबूबुल हक ने 5-year प्लान दिया था जब उन्होंने कॉस्मेटिक डेवलपमेंट की थ्योरी लिखी है, लेकिन जब हम महबूबुल हक की बात करते हैं तो आपने देखा 5-year प्लान देते ही उनको जो है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बना दिया गया, उसके बाद ही वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बना दिया गया। डू यू बिलीव कि कुछ पैटर्न्स ऐसे बनाए गए हैं, सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि हम इसी कंडीशन में रहें जो साउथ एशिया का भी प्रिवेलिंग कंडीशन है? First of all, you might have missed one interesting point that we want more skilled people. We don't want MBAs, BBAs, bachelors, masters and higher education people. हमारे पास एक डेटा है, एक इदारा है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सारी दुनिया में जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, they provide the information कि हमें बार्बर कितने चाहिए, हमें प्लम्बर्स कितने चाहिए, हमें इलेक्ट्रिशियन कितने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक फ्लॉ है कि 8th क्लास से अगर ये तय हो जाए कि मुझे पैशन किस चीज़ का है, मुझे किस फील्ड में जाना है और मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, ये वो चीज़ें जो हमारी पॉलिसी लेवल पे कुछ फ्लॉज हैं। इंस्टीट्यूशंस हैं, डिबेट बना हुआ है, वोकेशनल एजुकेशन मौजूद है, बट इट्स नॉट प्रॉपरली लिंक्ड। आप जो कह रही हैं कि कोई रोक रहा है, मैं आपको एक चीज़ बड़ी वजाहत से बताऊं जो आज डॉक्टर साहब ने बातें बताई हैं, सारी दुनिया में ASEAN के जो भी नाम आपने देखे उसको किसी ने तरक्की करने से रोका नहीं है। हम समझते हैं कि वी आर चेंज, हम समझते हैं कि हमें सोचने से और करने से कुछ हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स बेसिकली बाय विल। आज डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये दोनों हमारे सीनियर दोस्त बैठे हैं यहाँ। Over population, we say in sociology, population is Korean. It's also dangerous in many terms because when we are discussing about different religions, they say that India has limited resources, limited people, limited land. Just Dr. Pahlaj also discussed about the some countries like that Singapore and some other countries also. Maybe जब भी हम पॉपुलेशन में डिस्कशन करते हैं तो हम ये समझ रहे हैं तो एशिया जो है सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ पॉपुलेशन की वजह से हुआ है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, जो भी कंट्रीज हो। इवन इंडोनेशियन जो इंडिकेटर्स हैं इट इज आल्सो लाइक ड्यू टू लोअर पॉपुलेशन, जिसका पॉपुलेशन पे भी थोड़ा सा है। बेसिकली क्योंकि एशिया की ऐसे कल्चर्स आर डिफरेंट, इवन इनफैक्ट जापान ये चीज़ें होती है। मिसाल उसके अलावा जो हमारे बाई चांस हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं एशिया में, जैसे मैंने बताया उसका हांगकांग का क्या हुआ है, हांगकांग में वो आदमी जब
On behalf of the Area Study Center for East and Southeast Asia, I would like to thank all the audience, students, teachers, our respective speakers. Thanks for their participation. First of all, I am really grateful to the honorable speakers, both Professor Anna and Professor Pahlaj, who have spared precious time and contributed in this international seminar. In fact, both presentations were based on academic and scientific research. I am grateful to the Honorable Vice Chancellor. We are grateful to the Honorable Vice Chancellor for his support. We are thankful to the respectable Dean, Faculty of Social Sciences, who is always active in supporting Area Study Center for such kind of seminars and conferences. We are grateful to our senior colleagues, Dr. Ishrat, Dr. Zulfar Nagari, Dr. Zaidi, Dr. Khalid Bashari, Dr. Kudan Bashari, and all the teachers, and special thanks to the students who have traveled from the Arts Faculty Building and from some other departments to the Area Study Center to participate in this international seminar. In the end, I am also grateful to the members of electronic and print media who have come here to cover the proceedings of this international seminar. I am really grateful on behalf of the Area Study Center for all the audience who have attended and participated in this seminar. Thank you so much.